Chapter 16. The hair was curled, and the maid sent away. And Emma sat down to think and be miserable. It was a wretched business indeed. Such an overthrow of everything she had been wishing for. Such a development of everything most unwelcome. Such a blow. For Harriet. That was the worst of all. Every part of it brought pain and humiliation, of some sort or other. But, compared with the evil to Harriet, all was light. And she would gladly have submitted to feel yet more mistaken, more in error, more disgraced by misjudgment, than she actually was, could the effects of her blunders have been confined to herself. रानी को रवाना कर दिया गया और एमा दुखी होकर सोचने लगी कि ये वाकई ये बुरा हुआ था, सब कुछ इस तरह खत्म हो गया, हर चीज की ऐसी अठान जिसकी वो ख्वाहिश कर रही थी, जो हैरियट के लिए ऐसा धचका बनी। ये सबसे बुरा हुआ था। किसी न किसी वजह से उसका हर लम्हा दर्द और जिल्लत लेकर आया। लेकिन हैरियट के साथ बुरा होने के मुकाबले में ये सब हल्का था। और उसने खुशी से अपनी गलती का एहसास किया, गलती भी इस कदर ज्यादा, अपने गलत फैसले की वजह से वो खुद हकीकत में इससे ज्यादा जलील हुई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गलतियों के असरात वो खुद अपने तक ही महदूद रख सकती? If I had not persuaded Harriet into liking the man, I could have borne anything. He might have doubled his presumption to me. But poor Harriet. How she could have been so deceived. He protested that he had never thought seriously of Harriet. Never. She looked back as well as she could. But it was all confusion. She had taken up the idea, she supposed, and made everything bend to it. His manners, however, must have been unmarked, wavering, dubious, or she could not have been so misled. The picture. How eager he had been about the picture. And the charade. And 100 other circumstances. How clearly they had seemed to point at Harriet. To be sure, the charade. With its ready wit. But then the soft eyes. In fact it suited neither. It was a jumble without taste or truth. Who could have seen through such thick-headed nonsense? अगर मैंने हैरियट को इस आदमी को पसंद करने पर आमादा ना किया होता तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी। हो सकता है कि इसने मुझ पर अपना अंदाजा दोगुना कर दिया हो, लेकिन बेचारी हैरियट, वो इस कदर धोखा कैसे खा सकती थी? उसने एहतिजाजन कहा कि इसने हैरियट के बारे में कभी संजीदगी से नहीं सोचा था, कभी नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये सब कुछ एक उलझन थी। इसने ये ख्याल किया था, उसने सोचा था, और सब कुछ उसकी तरफ मोड़ दिया था। ताहम इसके आदाब बेनिशान, मुतज़लज़ल, मशकूक थे, या वो ऐसा नहीं हो सकता था। गुमराह तस्वीर, वो तस्वीर के बारे में कितना बेताब था। और पहली और 100 दूसरे हालात, वो किस कदर वाज़ेह तौर पर हैरियट की तरफ ही तो इशारा कर रहे थे। यकीनी तौर पर पहली, इसकी बर्जस्ता अक़ल के साथ, लेकिन फिर नरम आँखें, हकीकत में ये मुनासिब नहीं था। ये बस सब कुछ बेजायका या सच्चाई के बगैर एक गड़बड़ थी। ऐसे मोटी अक़ल वाली बेतकी बातों को कौन देख सकता था? Certainly she had often, especially of late, thought his manners to herself unnecessarily gallant. But it had passed as his way. As a mere error of judgment, of knowledge, of taste, as one proof among others that he had not always lived in the best society, that with all the gentleness of his address, true elegance was sometimes wanting. But, till this very day, she had never, for an instant, suspected it to mean anything but grateful respect to her as Harriet's friend. To Mr. John Knightley was she indebted for her first idea on the subject, for the first start of its possibility. There was no denying that those brothers had penetration. She remembered what Mr. Knightley had once said to her about Mr. Elton, the caution he had given,
the conviction he had professed that Mr. Elton would never marry indiscreetly, and blushed to think how much truer a knowledge of his character had been there shown than any she had reached herself. It was dreadfully mortifying. But Mr. Elton was proving himself, in many respects, the very reverse of what she had meant and believed him: proud, assuming, conceited, very full of his own claims, and little concerned about the feelings of others. Contrary to the usual course of things, Mr. Elton's wanting to pay his addresses to her had sunk him in her opinion. His professions and his proposals did him no service. She thought nothing of his attachment, and was insulted by his hopes. He wanted to marry well, and having the arrogance to raise his eyes to her, pretended to be in love. But she was perfectly easy as to his not suffering any disappointment that need be cared for. There had been no real affection either in his language or manners. Sighs and fine words had been given in abundance, but she could hardly devise any set of expressions, or fancy any tone of voice, less allied with real love. She need not trouble herself to pity him. He only wanted to aggrandize and enrich himself. And if Miss Woodhouse of Hartfield, the heiress of £30,000, were not quite so easily obtained as he had fancied, he would soon try for Miss Somebody else with 20, or with 10. यकीनी तौर पर वो अक्सर, खास तौर पर देर से, खुद से इसके आदाब को गैर जरूरी तौर पर बहादुर समझती थी। लेकिन ये सब कुछ तो हो चुका था, महज फैसले, इल्म, ज़ौक़ की गलती के तौर पर, दूसरों के दरमियान एक सबूत के तौर पर कि वो, मिस्टर एल्टन, हमेशा बेहतरीन मुआशरे में नहीं रहता था, कि इसकी बातचीत और गुफ्तगू का अंदाज शाइस्तगी से भरपूर था। कभी कभी ऐसी सच्चाई खूबसूरत भी होती है। ये ख्वाहिश थी, लेकिन आज तक उसे एक लम्हे के लिए भी हैरियट की दोस्त के तौर पर नहीं थी। इसके लिए शुक्रगुजार एहतराम के सिवा और कुछ भी तो ना था। मिस्टर जॉन नाइटली के लिए वो इस मौजू पर अपने पहले ख्याल के लिए, इसके इम्कान की पहली शुरुआत के लिए मकरूज़ा थी। इसमें कोई इनकार नहीं था कि उन भाइयों में इत्तेफाक था। इसे याद आया कि मिस्टर नाइटली ने मिस्टर एल्टन के बारे में एक बार इससे क्या कहा था, जो एहतियात उसने बरती थी, वो यकीन जिससे उसने ये दावा किया था कि मिस्टर एल्टन कभी भी बेदिली से शादी नहीं करेंगे। और ये सोचकर वो खुद भी शर्मा गई कि इसके किरदार के बारे में उसे कितना सच्चा इल्म हासिल था, और उसने उसी के बारे में उसे पहले से आगाह कर दिया था। ये बेइंतहा शर्मिंदगी का बायस बना। लेकिन मिस्टर एल्टन अपने आप को साबित कर रहे थे, बहुत से मामलात में, उसके बिल्कुल अलग जो इनका मतलब था, और इस पर उसे यकीन था। फखर, फर्ज, मगरूर, अपने दमों से बहुत भरा हवा, और दूसरों के जज्बात के बारे में बहुत कम फिक्रमंद, मामूल की बातों के बरकस, मिस्टर एल्टन की अपने पते उसे अदा करने की ख्वाहिश ने उसे अपनी राय में गिरफ्त कर दिया था। उसके पेशों और इसकी तजावीज़ ने उसकी कोई खिदमत नहीं की। उसने इसके वाबस्तगी के बारे में कुछ नहीं सोचा था, और उसकी उम्मीदों से इसकी तौहीन की गई थी। वो अच्छी तरह से शादी करना चाहता था, और उसकी तरफ नजरें हटने के लिए तकब्बुर करता था, मोहब्बत में होने का बहाना करता था। लेकिन वो बिल्कुल आसान थी कि उसे किसी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा जिसकी देखभाल करने की जरूरत है। उसकी जबान और आदाब में कोई हकीकी लगाव नहीं था। आही और उम्दा अल्फाज कसरत से दिए गए थे, लेकिन वो शायद ही इजहार का कोई मजमुआ वज़ कर सके, या आवाज के किसी भी लहजे को पसंद कर सके, जो हकीकी मोहब्बत से कम है। उसे इस पर रहम करने के लिए खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को बढ़ाना और मालामाल करना चाहता था। और अगर हार्ट फील्ड की मास वुडहाउस 30,000 पाउंड्स की वारिस इतनी आसानी से हासिल नहीं की गई थी जैसा कि इसने सोचा था, तो वो जल्द ही मास किसी और के लिए 20 या 10 के साथ कोशिश करेगी।
but that he should talk of encouragement, should consider her as aware of his views, accepting his attentions, meaning, in short, to marry him, should suppose himself her equal in connection or mind, look down upon her friend, so well understanding the gradations of rank below him, and be so blind to what rose above, as to fancy himself showing no presumption in addressing her. It was most provoking. Perhaps it was not fair to expect him to feel how very much he was her inferior in talent, and all the elegancies of mind. The very want of such a quality might prevent his perception of it, but he must know that in fortune and consequence she was greatly his superior. He must know that the Woodhouses had been settled for several generations at Hartfield, the younger branch of a very ancient family, and that the Eltons were nobody. The landed property of Hartfield certainly was inconsiderable, being but a sort of notch in the Donwell Abbey estate, to which all the rest of Highbury belonged, but their fortune, from other sources, was such as to make them scarcely secondary to Donwell Abbey itself, in every other kind of consequence. And the Woodhouses had long held a high place in the consideration of the neighbourhood which Mr. Elton had first entered not 2 years ago, to make his way as he could, without any alliances but in trade, or anything to recommend him to notice but his situation and his civility. But he had fancied her in love with him. That evidently must have been his dependence. And after raving a little about the seeming incongruity of gentle manners and a conceited head, Emma was obliged in common honesty to stop and admit that her own behavior to him had been so complaisant and obliging, so full of courtesy and attention, as, supposing her real motive unperceived, might warrant a man of ordinary observation and delicacy, like Mr. Elton, in fancying himself a very decided favourite. If she had so misinterpreted his feelings, she had little right to wonder that he, with self-interest to blind him, should have mistaken hers. The first error and the worst lay at her door. It was foolish, it was wrong, to take so active a part in bringing any two people together. It was adventuring too far, assuming too much, making light of what ought to be serious, a trick of what ought to be simple. She was quite concerned and ashamed, and resolved to do such things no more. लेकिन कि वो हौसला अफजाई की बात करे, उसे अपने ख्यालात से आगाह समझे, इसकी तवज्जो को कबूल करे, यानी मुख्तसर तौर पर इससे शादी करना। अपने आप को ताल्लुक या दिमाग में इसके बराबर समझना चाहिए, इसके दोस्त को हकीर समझना चाहिए, अपने से नीचे के दर्जात को इतनी अच्छी तरह से समझना, और जो कुछ ऊपर है इससे इतना अंधा हो जाना कि खुद को इससे मुखातब होने में कोई कयास नजर नहीं आ रहा। ये सबसे ज्यादा इश्तियाल अंगेज था। शायद इससे ये तवक्को करना मुनासिब नहीं था कि वो ये महसूस करेगा कि वो इसके हुनर और दिमाग की तमाम खूबसूरतियों में कितना कमतर है। इस तरह की बराबरी की बहुत ख्वाहिश इसके ख्याल को रोक सकती है, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि किस्मत और नतीजा में वो उससे बहुत बरतर थी। इसे मालूम होना चाहिए कि वुडहाउस हार्टफील्ड में कई नस्लों से आबाद था, जो कि एक बहुत ही कदीम खानदान की छोटी शाख है, और ये कि एल्टन कुछ भी तो नहीं था। हार्टफील्ड की जमीनी जायदाद यकीनी तौर पर नाकाबिले गौर थी, लेकिन डॉनवेल एबी एस्टेट में एक किस्म का निशान था, जिसमें बाकी तमाम हाईबेरी का ताल्लुक था। लेकिन उनकी खुशकिस्मती दूसरे जराए से ऐसी थी कि इन्हें डॉनवेल एबी के मुकाबले में हर दूसरी किस्म के नताइज में शायद ही देखते हुए बना दिया गया, और वुडहाउस ने तवील अरसे से मोहल्ले के लिहाज से एक आला मकाम हासिल किया था, जिसमें मिस्टर एल्टन पहली बार 2 साल पहले दाखिल हुए थे, बगैर किसी इत्तेहाद के, लेकिन तिजारत में या किसी भी चीज की सिफारिश करने के लिए जिस तरह वो कर सकते थे, बना सकते थे।
लेकिन इसके हालात और इसकी तहजीब, लेकिन उसने उसे इससे प्यार किया था, जो जाहिर है कि उसका इन्हिसार रहा होगा। और नरम आदाब और मुतकब्राना सर की बज़ाहिर नाहमवारी के बारे में थोड़ा सा बुड़बुड़ाने के बाद एमा को आम ईमानदारी से रोकना पड़ा और ये तस्लीम करना पड़ा कि इसके साथ उसका अपना सुलूक इस कदर शिकायती और पाबंद था, इस कदर शाइस्तगी और तवज्जो से भरा हुआ था, जैसा कि क़ियास इसका असल मकसद गैर मुतवक्के हो सकता है कि मिस्टर एल्टन की तरह एक आम मुशाहदे और नज़ाकत के आदमी को खुद को एक बहुत ही तयशुदा पसंदीदा तस्वुर करने की ज़मानत दे सके। अगर उसने इसके जज्बात की इतनी गलत तशरीह की थी तो उसे ये सोचने का कोई हक नहीं था कि इसे अंधा करने के लिए खुद गर्जी के साथ उसे इस तरह से गलत फहमी में पड़ना चाहिए था। पहली गलती और बदतरीन इसके सामने नजर आ रही थी। ये बेवकूफ़ी थी, गलत था किसी भी दो लोगों को इकट्ठा करने में इस कदर सरगर्म होना। ये बहुत दूर की मुहिम जुई थी, बहुत कुछ फर्ज लेना था, इस बात पर रोशनी डाल रहा था कि क्या संजीदा होना चाहिए, इसकी एक चाल जो सादा होना चाहिए। वो काफी फिक्रमंद और शर्मिंदा थी और इस तरह की मजीद चीजें न करने का अज़्म कर लिया था। Here have I, said she, actually talked poor Harriet into being very much attached to this man. She might never have thought of him but for me. And certainly never would have thought of him with hope, if I had not assured her of his attachment. For she is as modest and humble as I used to think him. Oh, that I had been satisfied with persuading her not to accept young Martin. There I was quite right. That was well done of me. But there I should have stopped, and left the rest to time and chance. I was introducing her into good company, and giving her the opportunity of pleasing someone worth having. I ought not to have attempted more. But now, poor girl, her piece is cut up for some time. I have been but half a friend to her, and if she were not to feel this disappointment so very much, I am sure I have not an idea of anybody else who would be at all desirable for her. William Cox? Oh, no. I could not endure William Cox, a pert young lawyer. She stopped to blush and laugh at her own relapse, and then resumed a more serious, more dispiriting cogitation upon what had been, and might be, and must be, the distressing explanation she had to make to Harriet, and all that poor Harriet would be suffering, with the awkwardness of future meetings, the difficulties of continuing or discontinuing the acquaintance, of subduing feelings, concealing resentment, and avoiding éclat, were enough to occupy her in most unmirthful reflections some time longer, and she went to bed at last with nothing settled but the conviction of her having blundered most dreadfully. To youth and natural cheerfulness like Emma's, though under temporary gloom at night, the return of day will hardly fail to bring return of spirits. The youth and cheerfulness of morning are in happy analogy, and of powerful operation, and if the distress be not poignant enough to keep the eyes unclosed, they will be sure to open to sensations of softened pain and brighter hope. Emma got up on the morrow more disposed for comfort than she had gone to bed, more ready to see alleviations of the evil before her, and to depend on getting tolerably out of it. It was a great consolation that Mr. Elton should not be really in love with her, or so particularly amiable as to make it shocking to disappoint him, that Harriet's nature should not be of that superior sort in which the feelings are most acute and retentive, and that there could be no necessity for anybody's knowing what had passed except the three principals, and especially for her father's being given a moment's uneasiness about it. These were very cheering thoughts, and the sight of a great deal of snow on the ground did her further service, for anything was welcome that might justify their all three being quite asunder at present.
The weather was most favorable for her. Though Christmas Day, she could not go to church. Mr. Woodhouse would have been miserable had his daughter attempted it, and she was therefore safe from either exciting or receiving unpleasant and most unsuitable ideas. The ground covered with snow, and the atmosphere in that unsettled state between frost and thaw, which is of all others the most unfriendly for exercise, every morning beginning in rain or snow, and every evening setting into freeze, she was for many days a most honorable prisoner. No intercourse with Harriet possible but by note. No church for her on Sunday any more than on Christmas Day. And no need to find excuses for Mr. Elton's absenting himself. उसने कहा, मैं यहाँ मौजूद हूँ। उसने दरअसल गरीब हैरियट से बात की कि वो इस आदमी से बहुत ज्यादा लगाव रखती है। उसने शायद कभी इसके बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन मेरे लिए, और यकीनन इसके बारे में, कभी उम्मीद के साथ ना सोचती, अगर मैंने इसे उसके ताल्लुक की यकीन दहानी ना करवाई होती, क्योंकि वो इतनी ही शाइस्ता और आजिज है जैसा कि मैं उसे समझती थी। हाँ, कि मैं उसे नौजवान मार्टिन को कबूल ना करने पर राजी करके मुतमईन हो गई थी। वहाँ मैं बिल्कुल ठीक थी। ये मेरी तरफ से अच्छी तरह से किया गया था, लेकिन मुझे वहाँ रुकना चाहिए था और बाकी को वक्त और मौका पर छोड़ देना चाहिए था। मैं इसे अच्छी सुहबत में मुतारिफ करवा रही थी और उसे किसी को खुश करने का मौका फराहम कर रही थी। मुझे ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब गरीब लड़की, इसका सुकून कुछ अरसे के लिए कट गया है। मैं इसकी आधी दोस्त रही हूँ, और अगर वो इस मायूसी को बहुत ज्यादा महसूस न करती, तो मुझे यकीन है कि मुझे किसी और के बारे में अंदाजा नहीं है जो उसके लिए बिल्कुल भी मतलूब हो। विलियम काकस, नहीं, मैं विलियम काकस को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जो कि एक नौजवान वकील है। वो शर्मिंदा होकर हंसने के लिए रुक गई और अपने ही दोबारा गिरने पर हंसी, और फिर इसके बारे में एक ज्यादा संजीदा, ज्यादा मायूस किन सोच दोबारा शुरू कर दी कि किया था, और हो सकता है, और होना चाहिए। हैरियट को जो तकलीफ का वजाहत करना पड़ी, और वो तमाम गरीब हैरियट को भुगतना पड़ेगा। मुस्तकबिल की मुलाकातों की अजीब वाओ गरीब सूरत हाल, वाकिफियत को जारी रखने या बंद करने की मुश्किलात, जज्बात को दबाने, नाराजगी छुपाने और एकट से बचने के लिए काफी थे। वो कुछ देर तक सबसे ज्यादा गैर खुशकिन मज़ाहिर में, और आखिरकार वो बिस्तर पर चली गई और कुछ भी तैना हुआ सिवाय इस यकीन के कि उसने इंतहाई खौफनाक गलती की थी। एमा की तरह जवानी और कुदरती खुश मिजाजी के लिए, अगरचे रात के वक्त आर्जी अदासी में, दिन की वापसी शायद ही रूह की वापसी लाने में नाकाम होगी। सुबह की जवानी और खुश मिजाजी खुशगवार मुशाबहत और ताकतवर ऑपरेशन के साथ है, और अगर तकालीफ आँखों को बंद रखने के लिए काफी दर्दनाक नहीं है, तो वो नरम दर्द और रोशन उम्मीद के एहसासात के लिए खलना यकीनी होंगे। एमा कल आराम के लिए उठी और फिर वो बिस्तर पर चली गई, अपने सामने बुराई के खात्मे को देखने के लिए और उससे बर्दाश्त के साथ बाहर निकलने के लिए ज्यादा तैयार थी। ये एक बड़ी तसल्ली थी कि मिस्टर एल्टन को वाकई उसके साथ प्यार नहीं करना चाहे, या खास तौर पर इस कदर मलनसार नहीं होना चाहे जिससे उसे मायूस करना चौंका देने वाला हो, कि हैरियट की फितरत इस आला कस्म की नहीं होनी चाहे जिसमें जज्बात सबसे ज्यादा शदीद और बरकरार हैं, और ये कि तीनों प्रिंसिपल्स के अलावा किसी भी जिस्म को ये जानने की कोई जरूरत नहीं थी कि क्या गुजरा है, और खास तौर पर उसके वालिद को उसके बारे में एक लम्हे की बेचैनी का सामना करना पड़ा। ये बहुत खुशकिन ख्यालात थे, और जमीन पर बहुत ज्यादा बर्फ के नज़ारे ने उसकी मजीद खिदमत की, क्योंकि किसी भी चीज का खैर मकदम किया गया था जो इस वक्त इन तीनों के बिल्कुल अलग होने का जवाब पेश कर सकता था। मौसम उसके लिए सब से ज्यादा साजगार था। अगरचे क्रिसमस के दिन वो चर्च नहीं जा सकती थी,
मिस्टर वुडहाउस दुखी होते अगर उनकी बेटी ने उसकी कोशिश की, और इसलिए वो या तो पुरजोश या नाखुशगवार और इंतहाई नामुनासिब ख्यालात हासिल करने से महफूज थी। बर्फ से ढकी हुई जमीन और ठंड और पिघलने के दरमियान इस बेचैन हालत का माहौल, जो कि वर्जिश के लिए सबसे ज्यादा गैर दोस्ताना है, हर सुबह बारिश या बर्फ से शुरू होती है और हर शाम जम जाती है, वो कई दिनों तक रहती थी। एक मर्ज़ टेडी हैरियट के साथ रहना मुमकिन नहीं, लेकिन नोट के जरिए इतवार को उसके लिए क्रिसमस के दिन से ज्यादा कोई चर्च नहीं है, और मिस्टर एल्टन की खुद से गैर हाजिरी के लिए बहाने तलाश करने की जरूरत नहीं। It was weather which might fairly confine everybody at home. And though she hoped and believed him to be really taking comfort in some society or other, it was very pleasant to have her father so well satisfied with his being all alone in his own house, too wise to stir out, and to hear him say to Mr. Knightley, whom no weather could keep entirely from him, "Ah, Mr. Knightley, why do not you stay at home like poor Mr. Elton?" These days of confinement would have been, but for her private perplexities, remarkably comfortable, as such seclusion exactly suited her brother, whose feelings must always be of great importance to his companions, and he had, besides, so thoroughly cleared off his ill humor at Randall's, that his amiableness never failed him during the rest of his stay at Hartfield. He was always agreeable and obliging, and speaking pleasantly of everybody. But with all the hopes of cheerfulness, and all the present comfort of delay, there was still such an evil hanging over her in the hour of explanation with Harriet, as made it impossible for Emma to be ever perfectly at ease. मौसम था जो शायद सबको घर में कैद कर सकता था, और अगरचे उसे उम्मीद थी और यकीन था कि वो वाकई किसी न किसी मुआशरे में सुकून ले रहा है, लेकिन ये बहुत खुशगवार था। उसके वालिद को उसके अकेले रहने से बहुत अच्छी तरह से मुतमईन करना उसके अपने घर बाहर हलचल के लिए बहुत अक्लमंद, और उसे मिस्टर नाइटली से कहते सुनने के लिए, जिन्हें कोई भी मौसम उनसे मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रख सकता था, आह मिस्टर नाइटली, आप गरीब मिस्टर एल्टन की तरह घर पर क्यों नहीं रहते? कैद के ये दिन होते, लेकिन इसकी नजरी उलझनों के लिए गैर मामूली तौर पर आरामदा, जैसा कि इस तरह की तन्हाई उसके भाई के लिए बिल्कुल मौजूद थी, जिसके एहसासात हमेशा इसके साथियों के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। और इसके अलावा उसने रैंडल्स में अपनी बदमिजाजी को इतनी अच्छी तरह से साफ कर दिया था कि हार्टफील्ड में अपने बाकी क़याम के दौरान उसकी दोस्ती उसे कभी नाकाम नहीं कर सकी। वो हमेशा राजी और फर्ज शनास रहता था और हर एक से खुश उसलूबी से बात करता था, लेकिन खुशी की तमाम उम्मीदों और ताखीर के तमाम मौजूदा आराम के साथ हैरियट के साथ वजाहत के वक्त इसके ऊपर एक ऐसी बुराई लटकी हुई थी, जिसने एमा के लिए बिल्कुल आराम से रहना नामुमकिन बना दिया था।